Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the new lecture of class 5th English. Students, take out page number 10. Question number 3. Homophones. Homophones. What is homophones? So homophones are the words that sound the same. Homophones are the words that sound the same, but they are spelled differently. Spelled differently, sound the same, but spelled differently and have different meanings. Homophones किसे कहते हैं? Homophones are the words that sound the same, जिसका आवाज़ एक जैसा हो. ऐसा वर्ड जैसे इसकी आवाज़ एक जैसा हो. Sound the same but they are spelled differently. ये याद रखिए, होमोफोन जिसे कहते हैं कि साउंड एक जैसा होगा, मगर स्पेल डिफरेंटली. उसका जो स्पेलिंग होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स एज वेल. मीनिंग भी डिफरेंट होगा, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा. जस्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होगा. साउंड द सेम, जस्ट साउंड द सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और उसका मीनिंग भी डिफरेंट होगा और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा. तो होमोफोन्स कैसे कहते हैं? होमोफोन्स उसे कहते हैं कि जिसको हम एक जैसे प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जांपल बॉय एंड बॉय. सो ऐसा वर्ड जिसको हम एक जैसे प्रोनाउंस करते हैं, साउंड एक जैसे आवाज़ निकालता है, मगर उसका जो स्पेलिंग है और उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा. उसको हम होमोफोन्स कहते हैं. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स आर रूट एंड रूट. ये कहते हैं रूट एंड रूट. एक वे को कहते हैं, रास्ते को, एंड एक जो है रूट. एक इसको हम अगर गौर से देखें और गौर से सुने तो इसको रूट एंड रूट साउंड द सेम, बट अगर आप देखें तो स्पेलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. ROOT एंड ROUTE. सो स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है. स्पेलिंग स्पेल्ड डिफरेंटली. इसी तरह वेस्ट एंड वेस्ट, इसमें भी साउंड एक जैसा है मगर इसका मीनिंग और इसका स्पेलिंग वो सेम नहीं है. फाइंड एंड फाइंड, बेयर एंड बेयर, एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ homophones. More examples in the form of sentence. अगर देखें सेंटेंस में भी उसका एग्जाम्पल यूज हुआ है. The earth revolves around the sun. Asim loves his son. एक जैसे सन एंड सन, एक बेटे को कहते हैं और एक सूरज को कहते हैं. सन एंड सन, ठीक है. अगर आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपने क्या करना है? सन एंड सन. तो क्या है, इसको आप गौर से देखें. स्पेलिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है. स्पेलिंग और डिफरेंट. सन एंड SUN एंड SON, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम. They are the sounds are same but spelled differently. So these are homophones. Another example in the form of sentence is Sarim rode on a horse on the side of the road. Road and road. आप देखें एक जैसे आवाज़ निकलता है मगर इसका स्पेलिंग, इसका मीनिंग डिफरेंट है. The words sun and road are spelled differently and sound alike but have different meanings. They are called homophones, as I told you. Okay, now choose the correct homophone from brackets to complete this sentence. यहाँ पर sentences है और यहाँ पर homophones यूज हुआ है. तो जो homophones आपके ख्याल में जो वर्ड इसके लिए करेक्ट होता है, उसके लिए सुटेबल होता है, आपने उसके साथ वो लगाना है, ठीक है. द पोस्टमैन डिलीवर्ड द मेल. सो इसमें कौन सा वाला मेल आता है? दिस वन, MAIL. पोस्टमैन डिलीवर्ड द मेल. अगर हम ये लगाएंगे तो ये गलत होगा, उसका जो मीनिंग है वो फिर सही नहीं आएगा. ओके, सेकंड वन इज द हाउंड्स चेज द हेयर. ये भी होमोफोन्स है मगर इसमें जो सही है इसमें ये वाला आता है. करेक्ट वन ये है. ये होमोफोन्स है, एक जैसे आवाज़ निकालता है मगर आपने जो सही है वो लगाना है, ठीक है. यहाँ पर क्या है? ये वाला सेंटेंस के मुताबिक ये वाला सही है. The travel stayed at an inn.
ये वाला सही नहीं, इसके साथ ये लगाता है, ये होटल को कहते हैं एन, तो द ट्रेवलर स्टेड एट एन, तो ये एन ये वाला सही है, एन एंड इन। आप गौर करें तो इसका जो स्पेलिंग है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल भी सेम है। ये क्या है, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड द सेम बट दे आर स्पेल्ड differently and have different meanings. So these are all the examples of homophones. Now take out page number 12. So let's talk about sounds. Students, phonology. Do you know about phonology? So phonology is the study of sounds. Phono and logy. Phono means sound and logo means study. So phonology is the study of sounds. Here are some words, here are some sounds. Identify the difference between short and long vowel sounds. Now, what is short vowel and what is long vowel sounds? Short vowel sounds are those sounds which pronounce short, and long vowel sounds are those sounds which pronounce long. Short vowel sounds pronounce short and long vowel sound pronounce long. So first we will discuss about short vowel sounds. Sounds that are produced shorter. Sounds that are produced shorter are called short vowel sounds. Those sounds that are produced shorter are called short vowel sounds. For example, bit, rest, pen, rank, lot, full and mug. These are all the examples of short vowel sounds, and these are the symbols of these sounds. For example, bit, so it sound is there, it, bit, it, so it sound, this one is the symbol of it sound, it. And this one sound is rest, it sound. This one is it and this one eh. So eh, this is the symbol of eh sound. Look at this word, pen, eh sound, eh. So eh is the symbol. A sound symbol is this one. This is the symbol of A sound. Arrange, arrange, arrange. This one is the symbol of A sound. Look at this word. Lot, lot, So this one is the symbol of A sound, Full, full and O. The sound is O. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Is the sound mug, mug, not, but and hut. So a sound is there, and this is the symbol of a sound. So these are the examples of short vowel sound, because we produce these words short. You pronounce these all words shortly. So that is why these are the short vowel sounds. Now look at the long vowel sounds. What is long vowel sound? Long vowel sounds are those sounds that are produced or pronounced longer. Long vowel sounds are those sounds which are produced or pronounced longer. For example, sheep, tew, urn, dog and door. आप इसको साउंड को गौर से देखें तो इसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं बनिस्बत शॉर्ट वॉल साउंड के. शीप आप गौर करें, ई, द साउंड इज ई. दिस वन इज द सिंबल ऑफ ई साउंड्स.
tube, U. So U is the long vowel sound. So this one is the U symbol. On, L. For example, girl, father is the all sound. All sound is there. All, so on. Dark, ah. The sound is ah. Sound is ah. Dark. This is the example of ah sounds. Bow, cow. Door, O. The sound is O. Sound is O. So this one is the symbol of O sound. Now, students, pick the short and long vowel sound from the word bank and put in the column below. Okay. Abhi, these are the symbols of short and long vowel sound. So आपके ख्याल में जो short vowel sound के symbols है यहाँ पर लिखे इससे, और जो long vowel sound के symbols है वो यहाँ पर लिखे. तो मैं आपके लिए आसानी के साथ आपके लिए आसान करूँ कि जो long vowel के sound के आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि long vowel है या short vowel है. तो long vowel sound में आपको बताऊँ कि जो इसके साथ जो symbol के साथ डॉट्स है, डॉट्स, ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग है. इसके साथ डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये कि शॉर्ट है. इसके साथ भी डॉट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये भी शॉर्ट है. इसके साथ डॉट है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये सिंबल जो है ये लॉन्ग वॉवल का है. ये क्या है? ये भी शॉर्ट वॉवल है. ये भी क्या है? ये लॉन्ग वॉवल है. ये क्या है? ये शॉर्ट वावल है. ये क्या है? ये लॉन्ग वावल है. तो मैंने आपको बता भी दिया. अभी आपके लिए जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने ये पैराग्राफ ये करना है. ये जो मिसिंग है ना, ये करना है आपने. आपके ख्याल में जो साउंड्स शॉर्ट है, जो सिंबल शॉर्ट वावल का है यहाँ पर लिखे, और जो सिंबल लॉन्ग वावल का है वो यहाँ पर लिखे. So it's enough for today. Inshallah, see you in the next class. Stay at home and stay safe and stay healthy. Allah Hafiz.